Alrighty everyone, today this is I think this might be our second video या उसी वीडियो की कंटिन्यूशन होगी या सेकंड वीडियो की. Anyways, we're starting off with computer architecture. ठीक है, computer architecture. Now we have things to go through. एक ये हमारे पास एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं जिससे आसानी हो जाती है. वी नो व्हाट टू डू. सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस von Neumann computer model. अच्छा, आई नो ये ऑफन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, बट द थिंग इज इसमें सारी गेम फेच एग्जीक्यूट साइकिल के. ठीक है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फेच एग्जीक्यूट साइकिल देन यू आर सॉलिड, यू आर गुड टू गो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं von Neumann कंप्यूटर मॉडल की. फिर हम लोग उसी के अंदर हम लोग मेमोरी यूनिट सीपीयू. अब सीपीयू के अंदर हम लोग फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर सीपीयू या प्रोसेसर के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिस तरह ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वी हैव कंट्रोल यूनिट एंड वी हैव कंट्रोल यूनिट. ये भी सीपीयू का पार्ट होता है. ALU वो भी सीपीयू का पार्ट होता है. और वी हैव रजिस्टर्स, वो भी सीपीयू का पार्ट होता है. इसको हम ऑफन माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहते हैं. सो इफ यू यूज एनी ऑफ द टर्म इट्स सेम. सीपीयू इज आल्सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. देन वी डिस्कस अबाउट इनपुट आउटपुट. येट अगेन एक पूरा डिटेल चैप्टर है हमारे पास, तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ हल्की सी बात करते हैं कि हम लोग उधर किससे रिलेट करना चाह रहे हैं. ठीक है. अच्छा, देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग. इसी के अंदर एक चीज़ लिख लेते हैं, IAS. वो क्या है? इट्स पढ़ते हैं वो IAS क्या होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज द फेच एग्जीक्यूट साइकिल. अच्छा, फेच एग्जीक्यूट साइकिल जो है ना, these are basically two different, fetch and execute. फेच की साइकिल और एग्जीक्यूट की साइकिल हम एक लिखते हैं, बट फेच साइकिल में कुछ पॉइंट्स हैं, पर एग्जीक्यूट का एक ही पॉइंट हमारे उसमें होता है, एक है. तो सो ये हो गया. थर्ड थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इज बसेस एंड टाइप्स. बसेस और उसकी डिफरेंट टाइप्स हम लोग डिस्कशन करेंगे. So we have basically CPU, the ALU, the control unit, the registers, the type of registers, the memory unit, the memory operation. The memory operation उसमें read and write function है. Then we have buses, then we have the fetch execute cycle, and then we're done. ठीक है. So let's start off with von Neumann architecture model. Von Neumann architecture model. Basically we have the memory unit, और memory unit के हमारे पास MAR है, MDR है. ठीक है. Then we have the processor. ठीक है. Then we have the processor, and here we have control unit here, which is PC, and CIR. PC is program counter and CIR is current instruction register. ये सब ये एक ही के पार्ट है. ठीक है. ये कंट्रोल यूनिट है, इसी के अंदर पार्ट है सारा. मेमोरी यूनिट के अंदर MAR और MDR, ये बेसिक भी चारों चीज़ें हैं रजिस्टर्स ही, बट ये इस तरह प्लेस हुई हुई हैं. ठीक है. देन वी हैव आउटपुट डिवाइसेस. We have input devices. Again ये मैं बहुत रफ से ड्रॉ कर रहा हूँ. There are a lot of diagrams you can find easily von Neumann model के ऊपर.
ये सिर्फ मैं एक रफ सा समझाना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। सो बेसिकली पहले क्या होता था, पहले प्रोसेसर इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, सही है। बेसिकली पहले होता था इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, दैट्स इट। वॉन न्यूमैन ने क्या किया, वॉन न्यूमैन इज द मॉडल आर्किटेक्चर और जॉन न्यूमैन इज द वन हु मेड इट। और उसने क्या किया, उसने स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट ले आया, स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट ले आया। उसके अंदर क्या, इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड प्रोग्राम डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। And stored programs were made up of instructions which can be executed in a sequential order. तो बेसिकली सारी गेम मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जॉन न्यूमैन लेके आया। सारी गेम जो वो लेके आया वो स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। सो नाउ लिखते हैं इसे, लेट्स स्टार्ट ऑफ, बल्कि हम इधर ही लिख लेते हैं, इसके साथ ही लिख लेते हैं वॉन न्यूमैन, ठीक है। So again let's start off. So published, थोड़ी सी बैकग्राउंड सिर्फ दे रहा हूँ, बाकी you get what I mean. Published by John Neumann in 1946. तो अगेन कंप्यूटर काफ़ी पहले से हैं, 46 या 45 डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ। सो एनीवेज उससे पहले जितने कंप्यूटर्स थे, एज ए मेंशन, उसके अंदर स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट नहीं था। सो हिज कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, सो हिज कंप्यूटर डिज़ाइन कंसिस्ट्स ऑफ वही सारी चीज़ें जो हमने अभी लिखा है, CPU द कंट्रोल यूनिट, ALU द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स, जितनी मैंने बाकी ऊपर सारी चीज़ें लिखी हैं वही चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। रजिस्टर्स, इनपुट, आउटपुट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात सारी यहाँ से शुरू होती है। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चर is based upon stored program concept, upon stored program concept। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं, आम लाइफ में हम लोग मेमोरी स्टोरेज एक ही चीज़ को रेफर करते हैं, ऐसे और होती भी सेम ही है, बट हम कंप्यूटर टर्म्स के अंदर इधर लिख लो कहीं कि कंप्यूटर टर्म्स के अंदर मेमोरी, जब भी बात होगी ना मेमोरी की, हम बात कर रहे होंगे रैम, रोम की। जब हम लोग स्टोरेज की बात कर रहे होंगे तो हम लोग बात कर रहे होंगे सेकेंडरी, हम लोग बात कर रहे होंगे सेकेंडरी की। सेकेंडरी से मुराद हमारे पास HDD, SSD एक्सेट्रा, सेकेंडरी जो है। और रैम को IAS भी कहते हैं, इंस्टेंट एक्सेस, ठीक है। So now let's get back to where we were. So it's a upon stored program concept where instructions data and program data are stored in the same concept, and stored programs were made up of। इस पे एग्जाम पे क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क का, 3 मार्क का, कि व्हाट इज द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यही आंसर है कि इस बेस्ड अपॉन स्टोर्ड प्रोग्राम क्या, वेयर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड प्रोग्राम डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम कॉन्सेप्ट एंड स्टोर्ड प्रोग्राम्स वर मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड। ये बात इंपॉर्टेंट है कि which can be executed in a sequential order, which can be executed in a sequential order। तो ये हमारे पास वॉन न्यूमैन की बात हो गई। ये सिर्फ जनरल इंट्रो है जो हम लोग इस चैप्टर में
करने वाले हैं. So let's start off with the CPU. With the CPU. It is referred as Central Processing Unit, and what it is, an electronic circuit. It is electronic circuit responsible for executing the instructions of a computer program It is sometimes referred, it is also known as a microprocessor. A microprocessor. The CPU contains ALU, CU and variety of registers. तो बेसिकली CPU है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, और डिफरेंट चीज़ें, हर चीज़ डिफरेंट चीज़ के लिए मॉनिटर हो रही है. अब ALU क्या है? वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है. वो नाम से ही आपको पता चल जाता है मैथमेटिकल और लॉजिकल चीज़ों को कैरी आउट करता है. कंट्रोल यूनिट नाम से पता चलता है वो सारी चीज़ों का कंट्रोल करता है. वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जिस तरह मैंने आपको ऊपर मेंशन किया. ये PC, CIR, MAR, MDR, ये सारी रजिस्टर्स हैं. ठीक है. नाउ बस CPU में इतनी बात याद रखनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. नेक्स्ट इज ALU. ALU stands for the arithmetic and logic unit. तो क्या है? The CPU या processor contains ALU, which is responsible slash the ALU allows arithmetic add, subtract, etc. and logic and or not, etc. operations to be carried out. तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल और द ALU अलाउज अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस टू बी कैरीड आउट. अच्छा, ये टर्म थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अरिथमेटिक. तो ये नोट लिख लें अपने लिए आसानी करने के लिए कि अरिथमेटिक इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल. ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, बट इट इज़ प्रेफर्ड आप अरिथमेटिक ही यूज़ करें. बट अगर आप अरिथमेटिक लिख के अलाउज मैथमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशंस भी करते हैं तो इट मेक्स द सेम सेंस. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंट्रोल यूनिट. ये अभी जितनी भी हम बात कर रहे हैं ये सब CPU के अंदर की बातें हैं. ठीक है. अब हमारे पास आ गया कंट्रोल यूनिट.
अब कंट्रोल यूनिट क्या है कि it contains the operation, it controls the operation of the computer's ALU, processor, memory, input, outputs. Again नाम से ही पता चल जाता है. So the CU controls the operations of ALU, processor and input output devices. ठीक है. अब करता क्या है कंट्रोल यूनिट? The control unit allows या instructs them how to respond to the program instructions. It has just read instructions. It has just read and interpreted from memory unit. ठीक है. अब during this process the control unit also provides the timing and control signals required by the other computer components. ठीक है जी. नाउ ये सारी, अच्छा मैं इधर क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द सीपीयू है. ऊपर हमने ALU भी बात की, दिस इज पार्ट ऑफ द सीपीयू. अब जब हम अगली बात करने लगे हैं रजिस्टर की, वो भी पार्ट ऑफ द सीपीयू ही है. नाउ वी हैव रजिस्टर्स, सीपीयू का ही पार्ट है. अच्छा जी. सो रजिस्टर्स क्या होते हैं कि रजिस्टर्स आर हाई स्पीड storage areas within the CPU. All data, this is very important, all data must be stored in registers before it can be processed. Before it can be processed. ठीक है. अब एक और चीज, रजिस्टर्स, ये तो हमें पता है कि लाजमी रजिस्टर्स के अंदर ही डेटा को स्टोर करना है बिफोर इट कैन बी प्रोसेस. लेकिन रजिस्टर्स आर यूज्ड टू टेम्परेरीली, ये जो स्टोरेज है ये टेम्परेरीली है. ठीक है. तो आर यूज्ड temporarily to hold data and instructions during processing. ठीक है. ये तो रजिस्टर्स क्या है? हाई स्पीड स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू. ऑल डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड एंड रजिस्टर आर यूज्ड टू टेम्परेरीली होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. ठीक है. नाउ we have types of register.
and what they do. ठीक है? So we will start off firstly with MAR. MAR क्या है? It is memory address register. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसके पास होता क्या है, करता क्या है? इट होल्ड्स द डेटा, बल्कि होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन, होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ द डेटा that needs to be accessed. That needs to be accessed. ठीक होगा? ये हमारे पास एक रजिस्टर आ गया. अगला रजिस्टर क्या कहता है? अगला रजिस्टर है MDR. This is memory data register. This is memory data register. और हम सारी चीज़ें कर रहे हैं टाइप्स. ठीक है? हम टाइप्स की डिस्कशन कर रहे हैं एंड अच्छा जी सॉरी थोड़ा ट्रैक ऑफ हो गया था. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो इट होल्ड्स डेटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, होल्ड्स डेटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम or to memory. कि या तो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम हो रहा है या टू मेमोरी हो रहा है. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अच्छा, अब मैं एक चीज़ अभी बता देता हूँ. ये जो हम लोग ने एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब हमने शुरू में बनाया था हमने मेमोरी यूनिट के अंदर MAR और MDR लिखा. ये हमने क्यों दिया कि ये जो दो है ना, ये जो दो हैं जिसके हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ये they are used in read and write operations. और जगह भी यूज होते हैं, फेच एग्जीक्यूट साइकिल में भी यूज होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये दो रीड एंड राइट ऑपरेशन में भी यूज होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हमारे पास है पीसी, जो आपने देखा होगा कंट्रोल यूनिट के नीचे लिखा हुआ था. पीसी इज प्रोग्राम काउंटर, और ये फेच एग्जीक्यूट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली टू इन फेच एग्जीक्यूट साइकिल. फेच एग्जीक्यूट साइकिल बेसिकली रजिस्टर्स के ऊपर ही है, तो वो हम लोग देखते हैं व्हेन उसका टाइम आएगा. अभी हम लोग ने मेमोरी यूनिट, रीड एंड राइट ऑपरेशंस डिस्कस करके देन वी विल मूव ऑन टू fetch execute cycle. So what it does, that it contains the address of the next instructions, to be fetched, next instructions to be executed, ठीक है.
Then next we have CIR. We have CIR, which is current instruction region. Current instruction region. ये क्या करता है? It contains the current instructions during processing. ये नाम से ही पता चल जाता है क्या कह रहा है, instructions during processing. And then we have the last type of register, which is AC. And this is our accumulator. This is our accumulator. Accumulator क्या करता है? Where intermediate arithmetic and logic results are shown. ठीक हो गया. So this is our types of registers. हमारे पास 5 किस्म के हैं. Registers क्या है? High speed storage areas within the CPU. All data must be stored in registers before it can be processed. Registers are used to temporarily hold data and instructions during the processing. Types क्या है हमारे पास? Memory address register holds the memory location of the data that needs to be accessed. Memory data register holds the data that is being transferred from or to memory, and they are used in read and write operations. PC के program counter contain the address of the next instructions to be executed. Current instruction region, ये current instruction register contains the current instruction during processing. And accumulator, where intermediate arithmetic and logic results are shown. Now we will be moving towards memory unit. Now we will be moving towards memory unit. So the computer memory unit. So the computer memory unit is made up of a number of partitions. Each partition contains address and its contents. Each address, sorry, memory unit. So the computer memory unit is made up of number of partitions, and each partition contains an address and its contents. अब इसका क्या मतलब है? Each address, अब एक मिनट, सॉरी, आई थिंक मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा, each address in the memory uniquely identifies every location.
and each and the contents will be the binary value stored in each location. The contents will be the binary value stored in each location. ठीक हो गया? तो हमने बात की कि द कंप्यूटर मेमोरी यूनिट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टीशंस, और उस नंबर ऑफ पार्टीशंस के अंदर हर पार्टीशन के अंदर एक एड्रेस है, एक कंटेंट है। एड्रेस है और उसी के कंटेंट है। तो एड्रेस क्या है कि एड्रेस इज इन द मेमोरी, हर एड्रेस जो है एक मेमोरी के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एवरी लोकेशन को, और उसके अंदर जो कंटेंट होंगे वो बाइनरी वैल्यू होंगे जो स्टोर हुए हैं हर लोकेशन पे, ईच लोकेशन पे। ठीक है, अब एड्रेसेस और रजिस्टर्स में क्या है, एक नोट लिखें, एड्रेस indicates where the data is stored, and registers are needed for data to be manipulated within the computer, are needed for data to be manipulated within the computer, ठीक हो गया? नाउ हम मेमोरी ऑपरेशंस की बात करेंगे, रीड एंड राइट की बात करेंगे। ठीक है, we will be discussing about memory operation, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रीड को और राइट को। हम रीड को डिस्कस करेंगे और राइट को डिस्कस करेंगे। तो रीड के अंदर डेटा रीडिंग क्या करती है कि इट हेल्प्स टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मेमोरी, राइट क्या करती है, इट इज स्टोरिंग डेटा इनटू अ मेमोरी। ठीक है, स्टोरिंग डेटा इनटू अ मेमोरी। इसके अंदर MAR और MDR ऐसे मेंशन यूज होते हैं। तो अब MAR किस तरह यूज होता है रीड के केस में कि एड्रेस ऑफ द डेटा फ्रॉम वेयर address of the data from where data has to be read, is stored in, हम सबको ये पता होना चाहिए कि stored in MAR। हमने मेमोरी एड्रेस में ऊपर क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है हमने कि holds a memory location the data that needs to be accessed। तो हमने जो डेटा रीड करना है वो स्टोर होगा MAR के अंदर। अब CPU क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, CPU क्या करेगा कि it will issue a signal, कौन सा सिग्नल, रीड सिग्नल। it will issue a read signal into MDR। हमने MDR क्या पढ़ा था, MDR हमने यही पढ़ा था कि holds data that is being transferred from or to memory। ठीक है,
अच्छा जी, so CPU issue a read signal into MDR for reading the data is loaded by the memory and can be used by the CPU and can be used by the CPU. Now हम read की तरफ बात करते हैं. हमने read में पढ़ा कि it is storing data into a memory. तो क्या करता है सबसे पहले इसमें opposite case होगा. The CPU loads into MDR first. The CPU loads into MDR first to be stored into memory. Into the memory. देखिए हमने ऊपर यही बात की थी कि MDR holds data that is being transferred from or to memory था. अब इसके अंदर into to be stored into the memory की बात हो रही है. ठीक है, तो CPU क्या करेगा? CPU loads address of memory location where the data has to be stored this address is loaded into MAR. So CPU loads address of memory location where the data has to be stored. This address is loaded into MAR. हमें पता है क्योंकि MAR क्या करता है? MAR holds the memory location of the data that needs to be accessed. Yeah, that needs to be stored in this case. तो CPU क्या करेगा अब? CPU issues a write signal to indicate that the data present in MDR should be loaded at address in MAR by memory. So अगर आप देखें इन दोनों को कंपेयर करें, so this is basically an opposite of it. Read में क्या होता है कि address of the data from where data has to be read is stored in MAR first. CPU write में क्या होता है कि the CPU loads into MDR first to be stored into the memory. CPU loads address of memory located where the location where the data has to be stored. This address is loaded into MAR. तो इसके अंदर क्या होता है कि CPU issue a signal into MDR for reading. तो ये read के अंदर MAR से MDR के अंदर जाता है, whereas in write में MDR पहले first load करते हैं CPU और फिर उसके अंदर MAR के अंदर लोड होता है. ठीक है, और फिर CPU इसमें एक read signal issue करता है and the data is loaded by the memory and can be used by the CPU. Whereas in write में CPU issues a write signal to indicate that the data present in MDR should be loaded at address in MAR by the memory. So this is our read and write operation done. Now we have buses and fetch execute cycle, and then we are done with the chapter. So all right, now we have buses. बसेस क्या है? बसेस रियल लाइफ में क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ऐसा ही है. तो इस केस के अंदर भी बसेस इन कंप्यूटर आर आल्सो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट कनेक्ट्स द मेजर इंटरनल कंपोनेंट्स टू द सीपीयू. तो क्या है? बसेस आर द मीन्स
are the means by which data is transmitted from one part of the computer to another, connecting all major components to the CPU and memory. To the CPU, which is our processor, and memory, which is our RAM. ठीक है. अगली चीज, एक और चीज कि they send out signals कौन से signals? Control signals to make sure everything is synchronized. ठीक हो गया जी. So now we will be talking about the types of buses. The types of buses, it is हम types of buses के अंदर buses की description and इसकी direction discuss करेंगे. हमारे पास 3 किस्म की types हैं. So types number 1 हम बात करेंगे address bus की. किसकी बात करेंगे? address bus की. address bus क्या होता है? address bus क्या होता है? It carries signal relating to addresses between the processor and memory. इसकी डायरेक्शन किधर है? इसकी डायरेक्शन की बात करें या हम लोग इसकी सिग्नल की डायरेक्शन या डेटा की डायरेक्शन, सिग्नल स्लैश डेटा की डायरेक्शन किस तरफ है? सो जो हमारे पास एड्रेस है, इट इज यूनिडायरेक्शनल. इसका क्या मतलब है कि सिग्नल्स ट्रेवल, इसका मतलब क्या है? signals travel in one direction only. ठीक है. अगली बस हमारे पास जो है वो है कंट्रोल बस. बल्कि हम लोग पहले डेटा बस कर लेते हैं. देन वी हैव डेटा बस. डेटा बस क्या काम करती है कि डेटा बस सेंड्स डेटा बिटवीन द प्रोसेसर, द मेमोरी यूनिट एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सेंड्स डेटा बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट एंड इनपुट आउटपुट. ठीक है. अब डेटा बस जो होती है, इट इज बाय डायरेक्शनल. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिग्नल्स कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन. ठीक हो गया. एंड देन द लास्ट बस वी हैव इज द कंट्रोल बस. The last thing we have is the control bus. अच्छा, अब कंट्रोल बस क्या होती है कि कंट्रोल बस अगेन as it says by the name carries signals relating to the control and coordination of all activities within the computer. Carries signals
relating to the control and coordination of all activities the computer within the computer. ठीक हो गया? इसके एग्जाम्पल्स include read and write operations. Read and write operations. अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन जो है ना, इसकी डायरेक्शन इट इज रिगार्डेड, अच्छा इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, इसको रिगार्ड करते हैं एज बोथ यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल. ये क्यों? ये इसलिए ड्यू टू द इंटरनल कंप्यूटर due to the internal connections within the computer architecture. Within the computer architecture. ठीक हो गया? हमारे पास buses हो गई, and the last thing is the fetch execute cycle. Alright, the last thing we have to do is the fetch execute cycle. Before studying the cycle, I want to write some points. So to carry out set of instructions, first of all, the processor or the CPU fetches data and instructions from memory and store them in suitable registers. Both address and data buses are used in the process, and this is the most important point, that each instruction needs to be decoded before execution. और इसीलिए decoded before execution, और इसीलिए हम इसे fetch execute या fetch decode साइकिल भी कहते हैं. डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इसको क्या कहते हैं एनीवेज फेच एग्जीक्यूट साइकिल की जब बात करते हैं हम लोग, सो ऑलराइट, सो फेच एग्जीक्यूट साइकिल, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखने थे जो मैंने लिख लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेच एग्जीक्यूट साइकिल. सो फर्स्टली, the program counter contains the address of the memory location of the next instruction which has to be fetched. ये कोई नई बात नहीं है. Again, as मैंने जब रजिस्टर्स पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने यही पीसी के ऊपर प्रोग्राम काउंटर के ऊपर मैंने यही लिखा था कि it contains the address of the next information to be executed. तो यही है कि contains the address of the memory location of the next instruction which has to be fetched. ठीक है. अगला है the address is copied from PC to MAR via the address bus. The contents or the instruction at the address contained in the MAR is copied into the MDR temporarily. The instruction in the MDR is copied and placed into the current instruction region. अच्छा, इस फिगर के अंदर
4 पॉइंट्स आपने लिख लिए ना, 4 के बाद एक फिफ्थ पॉइंट है, which I would suggest you guys should add. If the instruction contains an address, if the instruction contains an address, it is placed in the MAR. ये एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में इसी तरह का एक टेबल आया है, उसमें लिखा हुआ है आप नंबरिंग करें, तो इसके अंदर ये आया हुआ है, एंड दिस इज द फिफ्थ पॉइंट. और इसके बाद the value in the PC is then incremented by 1 so that it now points to the next instruction which has to be fetched, and the instruction is finally decoded and then executed by sending out signals via the control bus to the various components of the control system. अब इधर मेरी बात सुनें, यहाँ तक जो है ना मैंने बात जितनी की है, फिफ्थ पॉइंट इंक्लूडिंग, वो है फेच. लास्ट पॉइंट हमारे पास एग्जीक्यूट है. और ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज देखेंगे तो जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, जो 6 और 7 पॉइंट्स हैं, 6th 7th पॉइंट कैन रिप्लेस वन अनदर. आप मार्किंग स्कीम भी खोलेंगे, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज कहती है कि दिस इज द 6th पॉइंट, डिफरेंट सोर्सेज कहते हैं कि ये जो है ना ये वाला पॉइंट दिस इज द 6th, और कुछ कहते हैं कि दिस इज द 6th, कुछ कहते हैं दिस इज द 7th, कुछ कहते हैं दिस इज द 7th. इसकी वजह से मार्किंग स्कीम के अंदर ये जो मैंने बात लिखी है, ये मार्किंग स्कीम अप्रूव्ड है. आप अपने लेट्स सपोज आप किसी भी रिसोर्स के साथ स्टडी करते हैं, ये तो कंप्यूटर साइंस की बुक है, आप किसी भी डिफरेंट ऑथर की बुक यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आखिरी 2 पॉइंट्स रिवर्स हुए हों तो उससे कुछ भी नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता. और इवन मार्किंग स्कीम के अंदर आपको ये लेनियंसी दी हुई, आप इसके ऊपर 7 लिखें, 6 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, बाकी सारे पॉइंट्स इन शुड बी ऑर्डर. ठीक हो गया. दिस इज इट फॉर फेच एग्जीक्यूट साइकिल, और सारी गेम फेच एग्जीक्यूट साइकिल की ही है, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ यू डोंट नो if you don't know if you don't know buses, you don't know memory operations, you don't know address, उसके बगैर आपको नहीं होगा. ठीक है. So now we are done with our topic. हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जितनी हमने थिंग्स जो गो थ्रू किया था वो भी हमने सारा कर लिया. So this is it for me. I'll see you guys in the next chapter. Till then, खुदा हाफिज़.